अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है? किसी रिफ्यूजी का बंटवारे से अल्पसंख्यक बने भारतीय का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हाल ही में मोदी सरकार ने एक्ट पास किया है जिसमें दीगर ममालिक में रहने वाले हिंदू माइग्रेट करके हिंदुस्तान आ सकते हैं, जिसको लेकर कुछ मुसलमानों ने खिलाफ वर्जी भी की, जिनमें असदुद्दीन अवैसी सर फहरिस्त हैं कि इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर फर्क पड़ेगा। ये गलत कानून है, भारत के आइन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। हम हरगिज़ मोदी सरकार ने हमेशा ऐसे फैसले लिए हैं जिससे हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं, फिर चाहे वो कश्मीरी हो या फिर दीगर मुसलमान जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसे हालात में मुसलमानों के लिए तजवीज़ दी है कि कुछ मुसलमानों ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किए हैं कि क्या मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो गैर मुस्लिम ममालिक से हिजरत करके मुसलमान ममालिक में चले जाएं, या फिर अगर कोई मुसलमान जो कि मुस्लिम ममालिक में रहता हो तो क्या वो गैर मुस्लिम ममालिक हिजरत करके जा सकता है? Is it permissible to move from one Muslim country to another non-Muslim country for a better life? Is the legal point of view of Muslims staying in non-Muslim country? Question asked. इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला दिया कि जब मौत का फरिश्ता आएगा तो इंसान से पूछेगा कि तुमने इतने गुनाह क्यों किए, तो इंसान कहेगा कि हम ऐसी रियासत में रहते थे कि वहाँ पर हम मुसलमानों के लिए मसाइल बहुत ज्यादा थे। इस पर फरिश्ता जवाब देगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दुनिया को काफी बड़ा बनाया है, तुमने हिजरत क्यों नहीं की? और ऐसे गुनाहगार जहन्नुम में होंगे, यानी कि ये बहाना आखिरत में नहीं चलेगा। अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है तो हिजरत कर लेनी चाहिए। When the angels of death come to take the soul of the person who has died in sin against his soul and asks him, what is your state? And he replies that we have lived in oppression on this earth. Then the angel replies that the earth of Allah subhanahu wa ta'ala was spacious enough for you to migrate from the evil. अब यहाँ पर ये सवाल जरूर उठेगा कि हर कोई तो हिजरत नहीं कर सकता। उनके मुतालिक भी कुरान में फरमाया गया है कि जो लोग इतनी ताकत नहीं रखते कि हिजरत करें तो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा, और जो हिजरत करते हैं तो मरने के बाद अल्लाह ताला उनको अजर जरूर देगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपने घरों को छोड़ा हुआ है। Here Allah is talking about those who do hijrah for the sake of Allah and His Rasul. With those who leave their home for the sake of Allah and His Rasul, he'll find many refuge. And if he dies away from his home as a refugee for the sake of Allah and His Rasul, Allah will surely reward him. ये हुक्म तो उन लोगों के लिए है जो कि ऐसे गैर मुस्लिम रियासत में रहते हैं जहाँ पर वो अपनी इबादत आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसके बरक्स अगर रियासत की तरफ से दीन पर कोई पाबंदी नहीं है, अपनी इबादत आसानी से कर सकते हो, और इस तरह हिजाब वगैरह के मामलात पर भी कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर हिजरत करना फर्ज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हिजरत करते हो तो बेहतर है, क्योंकि बेहतर यही है कि अपने मुआशरे में रहा जाए जहाँ पर अपना दीन आम हो और दिल में कोई डर ना हो, क्योंकि जो भी कवानीन लगेंगे रियासत की तरफ से वो इस्लाम के मुताबिक होंगे। If you can practice your deen very freely and there is no compulsion on you, you can do all the faraiz, you can stay away from all the haram, then migrating becomes mustahab but not a fard. But there it is mustahab based on the verse of the Quran. ये तो उन लोगों के लिए बात है जो कि गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमान रहते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके मुतालिक भी कहा, जो लोग मुस्लिम रियासत से गैर मुस्लिम रियासत की तरफ जाना चाहते हैं तो किसी भी मुसलमान को ये इजाज़त नहीं कि वो मुस्लिम ममालिक को छोड़कर गैर मुस्लिम ममालिक की तरफ चला जाए, ये बिल्कुल हराम है। अब अगर कोई तालीम के लिए जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आएगा। इसके अलावा अगर कोई दावत का काम करता है तो भी वो गैर मुस्लिम रियासत की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसका मकसद ही दीन को फैलाना होता है। लेकिन इससे बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं मिल जाती है कि कोई ये कहे कि वो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए गैर मुस्लिम रियासत में रहना चाहता है ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल हराम है। To migrate from Muslim country to a non-Muslim country, it is haram unless it be for education or for the purpose of dawah. For education purpose you go, you acquire education, come back, no problem. Or if you go there not as a part-time da'i, as a full-time da'i to deliver the message, then the scholars say it's permissible. But if you just shift from Muslim land to a non-Muslim land for a better living as the questioner posed, it is not permitted at all.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان اور بنگلہ دیش کا حوالہ بھی دیا کہ وہاں سے بہت سارے لوگ مغربی ممالک میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. کبھی کبھار وہ تعلیم کا بہانہ بنا کر جاتے ہیں. تعلیم حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس آنا چاہیے. اکثر مغربی عالم یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر مائیگریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ مغربی ممالک میں شریعت بالکل ہی منع ہے. And I know there are millions of Muslims who have migrated from Muslim countries, from Pakistan, from Bangladesh to Western countries, USA, Canada, European countries, only basically for a better living. They talk about education, you have to come back. ذاکر نائک نے مزید کہا کہ زیادہ تر مسلم مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ان کی پیدائش بھی وہاں کی ہی ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی وہ ملک چھوڑ کر مسلمان ممالک کی طرف رخ کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت کم ایسے ممالک ہیں جو کہ اسلام کے ماننے والوں کو آزادی سے عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کینیڈا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمام غیر مسلم ممالک میں کینیڈا پھر بھی سب سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہے. دیگر ممالک کی نسبت کینیڈا کا وزیر اعظم کئی اور ممالک سے بہتر ہے اور لوگوں کو آزادی سے رہنے کا حق دیتا ہے. According to me, nowadays there are very few countries in the world, non-Muslim countries in the world, where you can actually practice very freely. And that also, in those countries, it will not be totally freely, but to a great extent. And I would agree that amongst the Western countries that are available, Canada would be better than the other Western countries. Canada is much better than USA. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب اس کی وجوہات بتاتے ہوئے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں جو کہ مشرکین میں رہتے ہیں اور جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مسلمان بالکل آزادی سے اپنے دین پر نہیں چل پائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے سنتوں پر پوری طرح نہ اتر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ حرام کاموں میں بھی مبتلا ہو جائیں، کیونکہ جب غیر مسلم کوئی حرام کام کریں گے تو وہ آپ کے سامنے ہوں گے، نظروں کی حفاظت آپ نہیں کر پائیں گے، تو ماحول کا اثر انسانوں پر ہوتا ہی ہے. What is the reason? And our beloved Prophet said, and this hadith is mentioned Sahih by Albani, the Prophet said, I disown those Muslims who live amongst the mushrikeen. I disown those Muslims who live amongst the idolaters. It's a Sahih hadith. The Prophet is disowning all the Muslims who live among the mushrikeen. دوستو، ہم دنیاوی زندگی بہتر کرنے کے لیے اکثر غیر مسلم ممالک کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس چکر میں ہم دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں. یہ دنیا تو عارضی ہے، اس کے لیے اتنی تڑپ اچھی نہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کے حالات ایسے بہتر کریں کہ کوئی بھی مسلمان غیر مسلم ممالک کی ضرورت محسوس نہ کریں. آمین. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.